today, let's start with chapter number 8, our natural resource. So in this chapter, I will tell you about some natural resources. So what are natural resources? Which are naturally occurring substances. जो आपके valuable होते हैं survival के लिए. Our planet is gifted with wide range of natural resources. जैसे आपके water, land, forest, animals, sunlight, mineral. These all are natural resources. They are gift of nature, right? Main reason that life is possible, years and shaped according to the natural resource. A nation wealth is largely dependent upon it. So let's study about the types of natural resources. We have inexhaustible or exhaustible. So inexhaustible, renewable जिसे हम कहते हैं जिनको आप renew कर सकते हैं, right? They can be renewed and so they are called renewable resources. Air, water, wind, solar energy, soil, trees, forest, animals. These are the examples. If we talk about air, human beings, animal, plants. They need air to breathe. Without air, life will not be possible. Air is natural resource which sustain life. जिस moving air को क्या बोला जाता है? Wind. Windmills have been set up in Tamil Nadu, Maharashtra and Gujarat. If we talk about water, it is world's most precious resource. Very small amount of fresh water. 97% जो water है वो salty है. Soil top layer जो होती है बहुत ज़्यादा fertile होती है जहाँ पे आप crop grow करते हैं. Soil provide nutrients for plants and animals. Basic needs जो होती है वो होती है आपकी food, clothing. And there are different types of soil and various crops are grown here. Trees and forest provide oxygen, breathe, shade and shelter. Fruits भी देते हैं, vegetables भी देते हैं. Trees prevent soil erosion. ये सबसे important natural resources हैं जो आपको shelter देते हैं wildlife, wood, medicines और herbs के. Right? Next is your animals, which is a source of variety of food. ये आपको milk, cheese, egg, meat देते हैं. Right? Clothing के लिए भी हम fur का use करते हैं clothes बनाने की. सोलर एनर्जी सन से मिलती है विच इज टैप्ड एंड यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटिंग. ठीक है, अब सब सोलर लगा रहे हैं, ये हमें लाइटनिंग दे रहा है. देन वी हैव एग्जॉस्टेबल दैट इज नॉन रिन्यूएबल जिनको हम रिन्यू नहीं कर सकते. ठीक है, सो फर्स्ट इज मिनरल इंपॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्रीज. इनको हमने डिवाइड करा है टू टाइप्स में, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक. ठीक है, नॉन मेटालिक में आपका सेंड आ जाता है क्ले, मीका, लाइमस्टोन. मेटालिक जो आपको डीप इनसाइड द अर्थ मिलता है, आयरन एंड मैग्नीज. ठीक है, वी कैन नॉट क्रिएट देम मोर, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल. If we talk about fossils, they are remains of plants that are living, that live long ago. ठीक है, जैसे पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, इनको because they are buried under the earth millions of years. Coal, it is found under the earth, important source of energy. It is used as fuel to cook, heat and to generate electricity. Petroleum, crude form of oil, इसको हम refine करते हैं, and it is also called black gold. It is available in limited stock. Let's how to conserve the natural resource. So we have learned about the importance of natural resource. So हमारी ड्यूटी है कि हम आप इसको कंजर्व करो. So that water and petroleum they are depending rapidly, so they are rising demand to conserve all natural resource. They won't be future if we don't conserve our natural resource. ठीक है, आपको फ्यूचर में नहीं मिले तो आपको इनको क्या करना है, कंजर्व करना है. गिफ्ट ऑफ नेचर है, इनका ध्यान रखना. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंजर्व. Now we have completed this chapter. Hope you understood. We will meet in next class. That's all for today. Thank you.